Hello, everyone, and welcome to the fourth episode of Not Your Therapist. Yet. And I'm your host, Anmolpreet Singh, and with my co host, Chakshu Kaul. Hi, Chakshu. Hi Anmol. How are you? I'm great. How are you? Why are you looking down there? Is your We must greatness held in your no, hands? it's humility. I must be humble for all the nice feedbacks we've received and all the new ideas that keep coming in because of something like this. So this is humility. Great. And that means all thanks to you for spreading the word. And we are in alignment. You know it if you know it. All right. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, चक्षु? लास्ट टाइम जब हम लोग ने बात की थी एक तो वी वर टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट. लास्ट टाइम जब हम लोग ने वो ड्राइंग की थी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए कि व्हाट डज मिसअलाइनमेंट लुक लाइक. So when you are speaking something, you are in a certain state of emotion because of that. But उसका बिल्कुल जो रेसिप्रोकेशन है या उसका सिमिलैरिटीज अगले में बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो आपको रेजोनेट नहीं हो रही है वो फ्रीक्वेंसी उसके साथ, तो आप मिसअलाइन हो रहे हो. उसका हमने वो देखा था. इफ यू हैवंट सीन इट देन यू विल हैव टू गो बैक एंड चेक इट अगेन बिकॉज कॉन्टेक्स्ट मैटर्स. सो we'll talk about that today. That continuation to what about the misalignment and what happens because of it. Right. And all that. Yes, so we did talk about how when two people might be talking about the same thing, but if they are not aligned mentally and if they are not in the same space when they are talking, it's ultimately going to lead to conflicts. Correct. Right. And then to resolve those conflicts, because this is something, of course, that you cannot see. You would call it conflict then when you are aware that this is conflict. Right. Because most of the time the tricky part about these misalignments is that you are not sitting there with the intent of conflict. So this conflict seems uninvited. मैंने तो बोला ही नहीं, जब मैंने किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मेरा तो ऐसा सोच था. क्या सोच है वो मैटर ही नहीं कर रहा ना, लेकिन क्योंकि बात आपके दिमाग कर रहे हैं, झगड़ा आपकी बॉडीज का है. Right. So there's no point of conflict is an aware state. You are aware that I have some part to play in this. Some part of you is aware. मगर जब तुम aware ही नहीं हो तो तुम क्या हो उसमें, तुम ये बोलते हो कि अगले में है कोई प्रॉब्लम. भाई इसके लिए तो हम बोलते हैं ना, इस मेंटल हेल्थ रियल क्यों किया था कि अपना इमोशन लगता है इमोशन, दूसरे का इमोशन ओवर एक्टिंग लगता है, नाटक लगता है, अननेसेसरी लगता है, बर्डन लगता है. Right. क्या कर लगता है that way. When we talked about misalignment, we talked how it can impact us, right? But at the same note, why is it important? वो अलाइनमेंट लाना क्यों ज़रूरी है, या फिर मिसअलाइनमेंट को रिजॉल्व कर पाना क्यों ज़रूरी है? सो मैं इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल लेने के पहले एक बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि उसमें समझ में आता है ये मिसअलाइनमेंट को ठीक करना क्यों ज़रूरी है. पहले एक एक्सट्रीम लेते हैं या एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारे साथ हुआ होगा कभी ऐसा, लोगों के सबके साथ होता है कि तुम घर पे जब होते हो, बचपन में स्कूल में पढ़ रहे होते हो और आप लेट्स से बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हो, और दिल पढ़ते पढ़ते आपने 2 सेकंड के लिए किताब साइड में रखी और उसी टाइम आपकी मम्मी आ गई और उसने देखा तुमको और तुम क्या कर रहे हो, बैठे पढ़ाई नहीं कर गुस्से रहे. हो गई लेट्स से. ठीक है. अब अगर उस डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट क्या चालू है, इमेजिन you're in a funny situation, your mom gets angry and you just like no, I was studying, you're trying कि उस स्टेट में ना जाए, इसको मैं पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं कि भाई ऐसा हो गया है, मैं पढ़ रहा था, ऐसा है. ये तो चलो एक फनी चीज है. एक एक्सट्रीम एग्जांपल क्या होगा इसका, a high stakes negotiation conversation for example somewhere where वो नेगोशिएटर हॉस्टेज सिचुएशन को मैनेज कर रहा है, या वॉर. अब वॉर में कैसे होता है, मिसअलाइनमेंट अगर हो गया है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत डेंजरस हो सकता है. वो वॉर में देखने को मिलता है. सो व्हेन कंट्रीज गो टू वॉर विद ईच अदर, बिफोर द वॉर the first layer of interaction would be a diplomatic intervention. Now there are diplomats going from both places, meeting each other, talking. वो लोग दो पूरी कंट्रीज के कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, और अगर इनका नर्वस सिस्टम अलाइंड नहीं है तो आज देख ही रहे हैं क्या हिसाब हो रहा है इसका. You recently might have seen that video where Trump and this Japan's current president or prime minister, prime lady, you can sense the tension between them both, right? And अभी recently जब वो बहुत टाइम पहले, not recently but जब अफगानिस्तान में तालिबान वापस आया था, तो बहुत सारी जगहों पे डिस्कशन ये था कि इनको रिसीव कैसे करेंगे, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस इतना अलग है. तो ये एक था डिस्कशन का पॉइंट. तो वॉर की सिचुएशन में जब डिप्लोमेट्स आपस में मिल रहे हैं, वो अगर अलाइन नहीं है, लेट्स से आई एम टॉकिंग sarcastically or I'm trying to be funny with you, you're not in that zone. Yeah, I'll be like, how dare you? Exactly. So
My intent is not to झाड़ो this equation between us. I thought you're there. हो भी सकता है, और या ऐसा हो कि बिल्कुल ही स्टोन वॉलिंग हो रही है, तो ना मसला आगे बढ़ रहा है ना बात आगे बढ़ रही है, वो क्या हो रहा है, या ताने मार रहे एक दूसरे को ऐसे डिप्लोमेट्स ताने मार रहे एक दूसरे को, एज इफ आई नो, बट स्टिल अंदर देखो साइड में जाके तो सब ताने मारते हैं जाके साइड पे गॉसिप भी करते ही होंगे, उनके भी तो करते होंगे ना आपस में कि यार ये इमेजिन दोज टू पीपल, ये रोल होना चाहिए. सो इफ इन अ वॉर सिचुएशन डिप्लोमेट्स आपस में बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से अलाइंड है, वो उनके नर्वस सिस्टम से भी प्ले हो रहा है. लाइक इफ इट्स अ गुड अलाइनमेंट, दे आर प्रॉब्ली कमिंग आउट रिलैक्स, देयर एंटायर fascia is relaxed, the signals that are sending, everyone around them is relaxed. Go back to any moment where in your own family one person is tense and you notice whoever is the emotional center of the family, वो tense हुआ तो उसके आसपास के सब tense हो जाएंगे, and it's a burden for the center holder also. They maybe don't want to be in that situation, but sometimes it is your burden, and if you choose to, what you do with that burden is your choice. The sooner you realize that, the better. You're free to choose, but every choice will come with some sort of consequences. And if you're okay with that, then ठीक है, that is the point. So वॉर की सिचुएशन में ऐसा है. Make sense? एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो दिमाग में आई, वो एक गवर्नमेंट और उसके लोगों के बीच का अलाइनमेंट भी इमोशनल होता है. गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन तो लॉजिकल करता है, बट एक दिक्कत इमोशनली होती है, क्योंकि जिस चीज पे हमें इफेक्ट हो रहा है वो इमोशनल मुद्दे हैं. पैसे की चीज, महंगाई की चीज, वो डे टू डे एबिलिटी को आपकी कैसा फील कर रहे हो आप, उसको भी इफेक्ट करती है. तो जब आप एज अ गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल किस इमोशन में हो या किस फ्लो में हो, और आपके लोग किस फ्लो में है, वो भी एक बड़ा ही लेवल का अलाइनमेंट दिखता है. मिस अलाइनमेंट होता है तो दिखता है टेंशन है, मिस अलाइनमेंट होता है तो दिखता है कि उसकी वजह से इकोनॉमी में किस तरीके की आपको स्पाइक्स ऑफ ऑन जैसे दिखेंगे. So misalignment का cost is not just between one relationship, it is constantly between everything. So, right. Yeah. So when we say misalignment, right, and we are also talking about between two human beings or government and the people, diplomats, right? So basically wherever there is interaction happening between another human, right, or with another being around us, right? So there must be so many different factors that must be driving this alignment or misalignment. Totally. Right, so what are these factors that we can say okay, this is what I need to take care of or be aware of to make sure where my alignment is going? So I think to see it better, you can say that you don't see the emotion that is being sent to you by a person. You see what that emotion is doing to your body, because you're physically capable of that first. तो अगर आपको किसी के बोलने से चिढ़ मच रही है या कुछ हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी का डेरिवेटिव है. आपकी बॉडी समझ नहीं पा रही है कि उसका डेरिवेशन इधर नहीं है, वो अज्यूम कर रही है उधर से. Right. So can that misalignment, the factors could be, of course, our body, the emotion, right, and of course the perception that we talk about when we are receiving that information from the environment. So are these the three factors, or is there something more to it? No, there are many more factors actually. सबसे पहले बॉडी, तो वो भी बोल रही हूँ मैं जिसके पास अवेयरनेस होगा. Because when you feel this in the body, the quick snap understanding that you make is that you are causing me distress. So because of you, I am in distress. So naturally, if my brain is wired to function for me, if something is not causing me some pleasure or something good, what will I do with it? I'll try to avoid it. Correct. So to avoid it, where does the brain go? It goes back to its own schemas. Now schemas का मतलब क्या है, किस तरीके से रिलेट करते हो आप अपनी पुरानी लाइफ, चीजें, हिस्ट्री, एक्सपीरियंसेस, जो हमारी कंडीशनिंग पे चला जाता है. You'll notice for a lot of people, especially in this whole gender war situation, women and men. So in this gender war situation, you'll notice in a lot of stereotypical situations, you'll see where one person is found saying, "You're not listening to me," and it is triggering for the other person constantly, because you'll notice ये दो sample लोग represent a very large pool of people जिनके साथ यही हो रहा है. You're not listening to me, I am listening, how else do you want me to listen? क्या हुआ? Tell me, what did I say? You don't let me talk only. So now we know these are the factors, right? How do you think these factors needs to come in sync? How do they come in sync to create an alignment? See, your mind uses
like I'll give you an example. You're working in your office setup, and there is some meeting going on. You enter the room, and you see a group of your colleagues in the corner. They laugh exactly at that moment when you enter. Now, what is the first thought that might pop up into your head? Which feels really. Correct. It could have been also, oh, they're laughing, I wonder about what, right? But it's mostly about क्यों, क्योंकि हम सब अपने ही दिमाग में रहते हैं. ठीक है, आप मेरे दिमाग में नहीं हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप खुद के दिमाग में हो, right? So in this particular order, what ends up happening, live in your own head, and mostly you need to understand why is this person causing this reaction to me, instead of thinking this person is doing this to me. वो अपना कुछ कर रहा है. Anyway, I am, मेरे बारे में बात हो रही है. तुमने ये सवाल कहाँ पूछा? क्या ये मुंह खोल के आगे बाहर पूछा? नहीं, आपने अपने दिमाग से पूछा. दिमाग अब कैसे आंसर लाएगा? एक्चुअल रियलिटी तो उनके पास है जहाँ ये हंसे. आप उनसे क्यों नहीं पूछते? व्हाई डोंट वी कन्फ्रंट पीपल एट द मोमेंट? मोस्टली क्या आंसर आता है? व्हाट डू यू थिंक? We were laughing about something else. और दे माइट फील बैड, और दे माइट जज मी फॉर आस्किंग कि वो मैं पूछने का फायदा नहीं है. तेरे को क्या करने गए हम लोगों से? हाँ, सब मिले तो कुछ रूड बोल दिया तो करके हम पूछते नहीं है. लेकिन सवाल पूछा गया है. आपकी अवेयरनेस ये नहीं है कि जवाब आप ही के दिमाग में दिया, और जवाब ये था कि तेरे बारे में बात हो रही, क्योंकि हर इंसान अपने ही फिल्म का हीरो होता है. अपना डॉक्यूमेंट्री अलग से चल रहा होता है दिमाग में, आप ही का चल रहा होता है. सो उस मोमेंट पे आप किससे पूछते हो? दिमाग से. दिमाग अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस में जाता है और फिर ढूंढता है इंस्टेंसेस कि हाँ, 2 दिन पहले मैंने मैसेज किया था ग्रुप पे, तब भी इन लोग ने मेरा मैसेज को रिप्लाई नहीं किया था, और परसों मैं चल के जा रही थी और इसने सबको हेलो बोला, मेरे को हेलो नहीं बोला. So you start now picking these instances that you didn't like just a few days back as the reason for why they are laughing at you. Yeah. And then you're behaving with them that way. What do you don't tell them, you avoid them. And they'll ask you what happened. Nothing. I'm okay. They have no idea. If you could have just asked them कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, they could have just told you कि अरे तेरे आने पे ये अपनी सीट से गिरता गिरता बचा तो एकदम हम लोग हंसी छोड़ दी. It could have been just that, but we would never know. So your history is now से गिरता गिरता बचा. We would never know, because your history now, the one part you chose is this. अब you chose is this is very tricky ना, because तुम खुद के साथ मिसअलाइनमेंट में. इसलिए बोला जाता है कि रिलेशनशिप्स एक इंक्यूबेशन सेंटर बन जाते हैं तुम्हारे खुद के इश्यूज के लिए. Because और किधर तुमको पता चलेगा? कहीं और नहीं. Exactly. And that's one person you would also want to be yourself around them. So ultimately you keep throwing that misalignment at each other, which results in so many conflicts. And it results in a better mind-body alignment for you. Yeah. Because at each point when you can sense that कि मेरे the way this is going, मेरा resolution ऐसे जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बेसिस, उस करंट डेटा के बेसिस पे तुम्हारा दिमाग डिसाइड करेगा ना. अब मान लो तुम्हारा करंट डेटा कि मैंने जो ट्राई करना था, जो करना था कर लिया, नहीं हो रहा है. करेक्ट. नाउ इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग, because now is in front of you. How, what is the problem? Do you have the solution? If you don't have the solution, do you want to figure the solution out, or do you just want to be like, no, not my problem, leave it, this is totally yours, I have nothing to do with this. So तुम्हारा quality of life depend करता है इसके ऊपर. Right. And if you're okay choosing things that are, you're okay with misalignment with people, you should probably dismiss it also. Like these are, I feel, people who are misaligned totally with people constantly all the time, but and they're okay with it. And ये वही लोग हैं जो लोगों के इमोशंस के साथ इतना वो रिलेट करना चाहते भी नहीं. And I'm not saying this in a great way, okay? I'm not saying this in some nice, this recluse poet. It's not that. It's this, you see, it's not in that recluse poet kind of a way. It is in this, it's not क्या हो गया आज? इसको डांटना पड़ेगा क्या आज? नहीं, he's very aligned with us, I think. हाँ, जैसे तुमने अपने घर को ऑर्गेनाइज किया है, ढंग से ऑर्गेनाइज किया, तुमको मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ है. जब तुमने खुद ऑर्गेनाइज नहीं किया है तो तुमको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ है, और तुम फालतू में लड़ रहे हो कि मेरे को पता है, मैंने नहीं लिया, और निकला कहाँ से तुम्हारे पास. अब एंड देन यू से हो गया ना, तो फिर हो जाता है कभी होता है, कभी कभी कांस्टेंट हो रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है. इसका वॉर इक्विवेलेंट क्या है? जब डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन काम नहीं करती, बात करना नहीं करने का, मेरे को तेरे से बात नहीं करने का, वॉर होगा. इस पे क्यों हंसा रहा है भाई? वॉर की सिचुएशन में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काम नहीं किए, वो मिस अलाइन होके, भाई ये तो बिल्कुल ही एकदम झूठा है, मेरे को इससे कोई बात नहीं करने का, अपनी इससे डील ही नहीं करने का इसके साथ, ऐसा बोल के तुम निकल गए वहां से, तो नेचुरली उसके बाद से 2 कंट्रीज की जब
टाइज कम्युनिकेशन की बंद होती है, तब ही वॉर चालू होता है। राइट। एंड इसी का चीज आप अपने रिलेशनशिप में भी देखते हो। हम्म। अब मान लो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में यही सेम चीज होती है, यू आर Okay, we've discussed a lot of examples of हाँ misalignment. अब बताओ Now tell align me, हो how गया। do we, what do we do to become more aligned? Mental masturbation. Become more aligned with people. The first thing in order to become aligned with someone is to tap into your own experience of the event. Tap into the fact that you yourself have been in situations where you were not understood, and you have explained to someone that this is not how I'm thinking, this is not how I'm feeling, this is exactly that situation, except someone else is saying it to you now. So give them the possibility of the doubt कि भाई हो सकता है कि शायद इसका पर्सनल कुछ हो रहा है, allow them that, right? First, so don't become reactive, become responsive, sort of a thing. And इसका मतलब ये नहीं कि तुम झेलो, वो नहीं है इसका मतलब. That is why I'm saying कि if you're aware about your organization, then you are in that position to tell me what's in what drawer. If you're not, if I am the one who has organized that position for you, then I know. Now if it's your organization, then you pick it up. So how do we organize that? What do we have to do to make it more organized in our head, so that we know when we are, even if we are talking to somebody who's not very aligned, right? Let's take everybody for most of the instances, right? But if I know my alignment, I can at least steer the conversation in a way where I know, how can I bring that person to the kind of alignment that I am at. The first thing would be intent. When you feel strongly that your intent is not to hurt the other person, and the other person is saying the same thing to you, believe them despite your brain telling you. Because the other person, and if your body is allowing it, that's what I'm saying. Okay? Your body has a way of responding to situations like this. It has a way of telling whether someone is lying to us or not. The same way, if you're stuck at traffic and आप पुलिस वाले को बोलते हो, वो आपको पकड़ लेता है किसी वजह से, तो आप उसको क्या बोलते हो कि जाने दो सर, मेरा कुछ प्रॉब्लम है. Right? You're not appealing to his logical side, because logically you just have been caught, you are wrong, right? You appeal to their emotional side only कि अरे थोड़ा problem है, and if they demand 1 2 का 4 out of you, what do? Student है वैसा, you have to understand how it is, right? You appeal to their emotions, उनको आता है उस time. You are caught red-handed by a parent doing some shit you're not supposed to do. How you are able to emotionally manipulate very quickly? Correct? Because तुम उस इमोशन के एकदम से वो बुल के ऊपर राइड करके, इसको तो मैंने धर लिया है, मैं इसको दिखा नहीं सकता. हाई स्टेक्स है उस मोमेंट पे, समझ रहे हो? ये है अलाइनमेंट का मतलब. तुम अपने अवेयर हो, दैट इज द कॉस्ट ऑफ अलाइनमेंट. यूर अवेयर कि अगर मैंने अपने मम्मी पापा को दिखा दिया, फिलहाल घर से बाहर हो, यू आर नॉट सपोज टू बी आउट, यू आर डूइंग, यू कम होम, घर आते ही से तुम्हारा कंट्रोल चालू हो जाता है. नॉर्मल हो तुम बिल्कुल, अंदर से नहीं हो नॉर्मल तुम, लेकिन यू आर अलाइंड विद द फैक्ट दैट if in case my body shows up differently, this one will read it. So you are grasping onto that with all your might, correct? People do that in relationships all the time, but this is what becomes exhausting eventually, because it's not coming from a place of honesty, it's coming from a place of adjustment, it's coming from a place of fine. So you mean to say that there needs to be more honesty in what you feel and what you do? There has to be space for that. Okay. There has to be space for all these things. You cannot compartmentalize. You can compartmentalize information. You can't if you have a very nice compartment full of lights, guess what's behind that board? Wiring. That is all. It's not compartmentalized at all. You know where wiring is compartmentalized? Guess. Bomb. वो भी कैसे सोच के कंपार्टमेंट कहाँ से आ रहा है करके ये करते हो ना तुम रिलेशनशिप में. बॉम्ब फटने वाला है, कौन सी वाली? ओ शिट, गलत फट गई. नेक्स्ट टाइम ओ शिट, नेक्स्ट टाइम तो वायर ये लग हो गई. Exactly. पर तो ग्रीन वाली को दबा गई, आग लग गई. लास्ट टाइम तो बोली थी ऐसा ही चाहिए. यहाँ तो चार ग्रीन वायर आ गई, कौन सी काटूं? अलग अलग ग्रीन के अलग कलर, कौन सा ग्रीन है ये सारे? नो, यस, मे बी चॉइस. दैट्स द पॉइंट. मतलब मिसअलाइनमेंट को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको इंसान को स्पेस देनी पड़ती है. वो है कॉस्ट उसकी. सबसे पहले यू हैव टू गिव दैट स्पेस. इफ फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड, एक पेरेंट अगर अपने बच्चे को किसी भी एंगल पे नहीं समझ पा रहा है, उसके करियर को नहीं समझ पा रहा है, उसकी चॉइस को नहीं समझ पा रहा है, उसके पर्सनैलिटी को नहीं समझ पा रहा है, उसके लाइफस्टाइल को नहीं समझ पा रहा है, उसकी सेक्सुअलिटी को नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, उसके प्रेफरेंसेस को नहीं समझ पा रहा है,
तो एक पॉइंट अगर ऐसा आए कि यार मेरे को नहीं समझ में आता तेरा, लेकिन देख तू देख तेरा देख, नहीं हो तुम अलाइनमेंट किस में, लॉजिक में, मुझे नहीं समझ आता तेरा, लेकिन तू देख, लेकिन ठीक है मैं हूँ, कुरकुरे मेरा है तेरा है की बात है, वैसा, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अलाइनमेंट, वेयर यू गिव दैट स्पेस टू द अदर पर्सन, Right, and you're ready to explore with them. yes, You're ready to and you're ready to observe. believe Yeah, that I'm agreeing to disagree, yeah, it's okay, that way. yeah. It's okay if we disagree on something. It's fine. I may not understand this now, Yeah, but but I maybe like you for you, exactly. and you come with both these things, Hmm. and I'm okay with that. Right. So there is a huge part of acceptance Yeah, that acceptance, comes a with it, big right? part That of acceptance. even though we know that each individual is unique, but how much of that fact do we actually accept and operate from? We always tend to look at people with certain biases, with certain stereotypes, with those compartments that With we our have, own burdens. with our own burdens, right? So many different things impact that one perception of that one person. Totally. And if imagine if that burden is taken away with just accepting the person the way they are, it And becomes because so see, easy. no, because that burden becomes your identity. Exactly. Yeah. Because you have lived your life in this way, is why your life is like this. Suddenly, if you remove the burden, you give me a warrior, you remove the warrior from the war. But they have to take their armor off at some point. Now, what is the point? Now, there is no war. But Exactly. that is the biggest problem with knights. They Yeah. can't. Yeah. Because they're so used to having that high tension around them. Now warrior could be anyone. जब तुम नहीं हो अब Hmm. जंग में, लेकिन तुम्हारा शरीर है, नहीं तो उसका एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहली चीज है कि अगर तुम्हारा लव्ड वन है सामने, उसको स्पेस दो. To say that there are always these emotional signals around us, right? But due to the misalignment, we tend to not read those signals, but we read what is going on inside of us. So for us to be able to be aligned with the environment and the people around us, it is important that first we become aware of what is going on inside us. Yes, it will impact us. It's not that it will It will not change impact you. us, right? But it will also, be there for us, because that system is equally important. Exactly, because Right. it's the byproduct of that system is you. Precisely, and the more aware we become, it becomes easier to manage or regulate that system and then operate the similar way from the environment and the stimulus or the things or the emotions that you're receiving from outside. So precisely that's how we wrap up today's episode. That's all. Thank you guys for watching today's episode. We had a lot of fun talking about how it is easy, difficult to be aligned or misaligned with someone, right? And we're going to talk about something more interesting things in the coming episodes. So stay tuned and do let us know how did you like the episode. If there are your views that you would want us to share on this platform, please comment below and subscribe and like and share with your friends. But there